बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डॉपलर इफेक्ट। अगर हम किसी रोड साइड पे खड़े हों और कोई एम्बुलेंस आ रहा हो बहुत दूर से, तो जितना वो दूर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कम सुनाई दे रही होती है। जैसे जैसे वो करीब होता जा रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और जैसे वो हमसे गुज़रता है अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो। सो यहाँ पे जो डिस्कशन है कि अ पुलिस कार इज़ पार्क बाय अ साइड ऑफ द हाईवे साउंडिंग इट्स 1000 हर्ट्ज सायरन। पुलिस कार है, उसकी 1000 हर्ट्ज सायरन है, वो बजा रहा है। सो इफ यू आर आल्सो पार्क बाय द हाईवे यू विल हियर द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर आप भी खड़े हैं तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। However, if there is a relative motion between you and the police car, either towards or away from each other, you will hear a different frequency. अगर आप पुलिस कार की तरफ जा रहे हैं या पुलिस कार आपके तरफ आ रहा है, या आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या आप एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, या एक खड़ा है दूसरा जा रहा है, तो उस सूरत में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो नहीं हो, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, यानी उसमें चेंज होगा ड्यू टू द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्राइविंग टूवर्ड्स द पुलिस कार एट 120 km/h, you will hear a higher frequency 1096 Hz, an increase of 96 Hz. If you are driving away from the police car at the same speed, you will hear lower frequency by 96 Hz. So what is the definition or the statement of the Doppler effect? That is the apparent change in frequency due to the relative motion of the source or observer. Relative motion में towards each other भी हो सकता है, away from each other भी हो सकता है, और एक स्टैटिक हो, दूसरा मूव कर रहा हो, either away or towards the observer, or the observer is moving away or towards the source. So there will be an apparent change in the frequency of the sound. This phenomena is known as the Doppler effect. This Doppler effect holds not only for the sound wave but also for the electromagnetic waves including the microwaves, radio waves and visible light. यानी Doppler effect का जो फिनोमेना है ये सिर्फ साउंड वेव्स के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके लिए भी है। Here however we shall consider only the sound wave. क्योंकि ये इस डिस्कशन में हम साउंड वेव्स में हैं तो सिर्फ साउंड वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम वी हैव टू मेजर द स्पीड ऑफ द साउंड, द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, द स्पीड ऑफ द कार्स. So we shall consider only sound wave and we shall take a reference frame. So what we take the reference frame? The body of ear, the ear through which the sound travels, we consider the ear to be stationary, so that the reference frame that we take is the ear, and we take the speeds with respect to the ear. This means that we shall measure the speed of a source of sound waves and the detector D or observer O of these waves relative to the body of the ear. Unless otherwise stated, the body of ear is stationary relative to the ground, so the speed can also be measured relative to the ground. यानी ज़मीन भी रेफरेंस फ्रेम लिया जा सकता है।
we assume S and D, the source and the detector or the observer, move either directly towards or directly away from each other at the speeds less than the speed of sound. If either the detector or source is moving or both are moving, the emitted frequency f and the detected frequency f dash are related by f dash is equal to f into v plus minus vd divided by v plus minus vs. V in this case is the speed of sound in air. Vd is the speed of the detector or the observer. Vs is the speed of the source. Now, in the numerator, we will use the plus sign if the detector is moving towards the source, and the minus sign when the detector is moving away from the source. In the denominator, we will use the plus sign if the source is moving away from the detector, and we will use the minus sign if the source is moving towards the observer. यहाँ पे यानी अगर मोशन टुवर्ड्स ईच अदर हो, या डिटेक्टर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या सोर्स डिटेक्टर की तरफ मूव कर रहा है या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी एफ डैश एफ से ज्यादा होगा. सो साइन को आपने इस तरह लेना है कि जो एफ डैश को इंक्रीज कर रहा हो जब भी टुवर्ड्स ईच अदर मोशन हो, या वन इज मूविंग टुवर्ड्स द अदर अंडर स्टेशनरी, तो उस केस में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. जब अवे मोशन हो तो उस केस में फ्रीक्वेंसी एफ डैश कम होगा. ठीक है, सो साइन को केयरफुली लेना है. When the motion of the detector or the source is towards the other, the sign on its speed must give an upward shift in the frequency, मतलब increase. When the motion of the detector or source is away from the other, the sign on its speed must give a downward shift in the frequency, and you have to choose the sign such that decrease the frequency when the motion is away from each other. So ये equation है, equation 1. This is the general. When let's say if the source is stationary, so in the denominator you just have Vs is equal to 0 and और नीचे सिर्फ V आएगा, ऊपर V प्लस माइनस Vd आएगा. अब ऊपर वाले केस में देखें, अगर सोर्स स्टेशनरी है, डिटेक्टर मूव कर रहा है, तो अगर डिटेक्टर टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स मूव कर रहा है तो ऊपर वाला प्लस साइन, अगर डिटेक्टर अवे मूव कर रहा है तो नीचे वाला माइनस साइन. सिमिलरली अगर डिटेक्टर स्टेशनरी है, सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो नीचे वाला नेगेटिव साइन लेना होगा. अगर सोर्स अवे मूव कर रहा है तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन लेना होगा. अब हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिराइव करते हैं कि so let us derive the relationship in the equation 1 for the Doppler effect on for the following two cases. Number 1, when the detector moves relative to the air and the source is stationary. डिटेक्टर मूव कर रहा है और सोर्स जो है अपने जगह खड़ा है. The motion changes the frequency at which the detector intercepts wave fronts and thus changes the detected frequency of the sound wave. Number 2, when the source moves relative to the ear and the detector is stationary relative to the ear, the motion changes the wavelength of the sound
and thus changes the detected frequency. फर्स्ट केस में क्या होता है, और सेकंड में. सो नंबर वन केस में भी दो केसेस हो सकते हैं, आइदर द डिटेक्टर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स. सेकंड में भी दो केसेस हो सकते हैं कि सोर्स टूवर्ड्स द डिटेक्टर मूव कर रहा है और अवे द डिटेक्टर मूव कर रहा है. सो detector is moving towards the stationary source. In this figure we see that this is the source. This blue spot is like the source that emits sounds, and this is stationary. Vs, the source speed or the source velocity is 0. It emits waves with wavelength lambda, and the detector and the sound moves radially outward. The sound waves are propagating radially outward with a speed v. Now what happens that the detector is moving towards the source. This ear is the detector. ये जो कान है जो सुन रहा है ये डिटेक्टर है या ऑब्जर्वर है. So it is moving towards the stationary source with a speed Vd. What happens when the detector is moving at a speed Vd towards the stationary source S that emits spherical wave fronts of wavelength lambda and frequency f, and these waves are moving at a speed v in the ear. The wave fronts are drawn one wavelength apart. The frequency detected by the detector, this is the rate at which the detector intercept wave fronts or individual wavelengths. What is frequency? The number of waves or wave fronts detected per unit time. अब अगर ये स्टेशनरी हो तो पर यूनिट टाइम जितने वेव फ्रंट्स यहाँ से गुजरते हैं वो फ्रीक्वेंसी f से गुजरते हैं, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये एमिट कर रहा है. लेकिन अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ तो ये वेव फ्रंट्स जल्दी जल्दी इसको पहुंचेंगे. Or on the other hand side, it will detect that the wavelength is decreasing. So if d was stationary, the rate would be f. यानी जिस रेट से ये वेव फ्रंट्स डिटेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f के बराबर होगा. लेकिन ये मूव कर रहा है डिटेक्टर, so the rate of detection will be greater, and thus the detect frequency f dash will be greater than the original frequency f. So let us for the moment consider that d is stationary. अब अगर ये stationary है तो कितने वेव फ्रंट्स ये पर यूनिट टाइम डिटेक्ट करता है, और फिर जब ये मूव करेगा तो कितने डिटेक्ट करेगा, हम उस दोनों का रिलेशन निकालेंगे. So let us consider for the moment that the detector is stationary. In time t, the wave fronts move to the right at distance vt. The number of wavelengths at this distance vt is the number of wave fronts intercepted by the detector. यानी ये सारे वेवलेंथ वेव फ्रंट्स जो है ये गोल सर्कल, ये सारे सर्कल्स जो है ये वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हेन द सोर्स एंड डिटेक्टर्स आर स्टेशनरी. दीज आर इक्वली स्पेस्ड. सो जितने वेव फ्रंट्स एक पॉइंट से गुजरते हैं इसका मतलब है कि उतना डिस्टेंस, उतने वेवलेंथ डिस्टेंस ये साउंड वेव कवर कर रहे हैं. सो इन टाइम टी
द वेव फ्रंट्स मूव टू द राइट डिस्टेंस vt, यानी एक वेव फ्रंट अगर यहाँ से आप ले लेंगे तो टाइम t में जो डिस्टेंस कवर करेगा s इज इक्वल टू vt। द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन दिस डिस्टेंस, अब इस वेवलेंथ में डिस्टेंस में vt जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसमें कितने वेवलेंथ्स है। So that wavelength is equal to the number of wave fronts detected by the ear. So the number of that wave fronts is the distance vt divided by the wavelength lambda. यानी this stationary ear detects vt over lambda wave fronts in time t, where v is the speed of the sound. Now the rate at which the detector D intercept wavelengths, so that is the frequency f detected by D, and the frequency is equal to the number of wavelengths detected or the number of wave fronts detected divided by the time in which they are detected, and the number of wave passing per unit time. So the number of wave that has passed in time t is Vt over lambda, and the time in which they have been passed is t. So this comes to be v over lambda. So v over lambda is the original frequency at which the sound is generated or the sound is produced. So this is the original frequency of the sound waves. In this case, equation 2 is for the case when both the source and the detector are stationary. Now we assume the case this is the case when the source is stationary and these sound waves propagate towards the source. So in time t they will cover a distance vt, and these wave fronts are separated by a length equal to the wavelength of the wave. So the number of wave fronts detected by the detector would be equal to vt divided by lambda. So that will be equal to the frequency. Now the second case is the one in which the source, over here the source is stationary and we consider the wave fronts to be plane, and the detector is moving with the speed vd. So now the detector is moving in this direction with speed vd, and the sound wave is moving in this direction with speed v. So these sound wave cover a distance vt in time t, but at the same time this detector covers distance vd into t. For both the same formula s is equal to vt is used. अब इस केस में यहाँ जितने वेव फ्रंट्स इसको पहुंच रहे थे टाइम t में, अब इससे ज्यादा पहुंचेंगे। क्यों? ये उन वेव फ्रंट्स में से इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, यानी इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. So the distance that is combinedly covered by the detector and the sound are equal to Vt plus Vdt. And the number of wavefronts that is detected by the detector in figure B over here, the number of wavefronts that this detector will detect would be equal to this distance, this total distance divided by the wavelength lambda.
So Vt plus Vdt divided by lambda is the frequency that is detected by the detector in this case. The new frequency which is detected when the observer is moving towards the source is equal to the number of wavelengths detected or the number of wavefronts detected divided by time of detection. तो टाइम तो वही है लेकिन नंबर ज़्यादा डिटेक्ट हुआ है. Vt plus Vdt divided by lambda. So this comes to be V plus Vd divided by lambda. And as we know that lambda is equal to V over F. So over here F we replace lambda by V over F. F will come over here. So F dash is equal to F times V plus Vd divided by V, where V is the speed of the sound, Vd is the speed of the detector. So when we add something in the numerator, it is greater and the denominator is smaller. When you divide a greater than by a smaller one, the value comes out to be greater than 1. And the f is multiplied by something greater than 1, this will be increased. Yeah, that is f dash will always be greater than f unless vd is 0. यानी जब तक ये स्टेशनरी ना हो डिटेक्टर और ये मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द सोर्स, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ वी कंसिडर द केस इन विच the detector is moving away. So if the detector is moving away, he will be detecting a lesser number of wavefronts because he is moving away. So he will observe that the wavefronts are coming slowly. So the distance, the relative distance that is covered by the sound wave comes to be Vt minus Vdt, and the number of wavefronts detected will be Vt minus Vdt divided by lambda, and the frequency f dash, the detected frequency, comes out to be f into V minus Vd divided by V. In this case, for non-zero Vd, the numerator is less than the denominator and hence f dash must be less than f. Yani the detected frequency will be smaller than the original frequency. So if we combine equation 4 and 5, we can write them that f dash is equal to f into V plus minus Vd over V. This is the case when the source is stationary and the detector is moving away or towards the source, stationary source. Plus sign for moving towards and minus sign for moving away. Now we come to the case where the detector is stationary. This is the detector. This here is the detector D, and its speed is Vd is equal to 0, and this source is moving. This source is moving towards the detector. What will happen? As this here perceives this wave, but the source has approached the detector, so the next coming wave will be detected sooner. That is, to this detector it appears that the wavelength has been decreased. So let D is stationary with respect to the body of the ear and the source is moving towards the detector at speed Vs. The motion of S changes the wavelength of the sound waves it emits, and thus the frequency detected by D. To see this change, let the time period is equal to 1 over f.
be the time between the emission of any pair of successive wavefronts W1 and W2. यानी कि अगर हम ये दो वेवफ्रंट्स ले लें, ये जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए वेवफ्रंट्स हैं, और इनके एमिशन के टाइम में जो डिफरेंस है, यानी एक एमिट हो गया तो उसके बाद जो दूसरा वेव एमिट होता है वो एक टाइम पीरियड बाद ही होगा, और टाइम पीरियड 1/f यानी फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली रेसिप्रोकल होता है. सो ड्यूरिंग टाइम t, wavefronts W1 moves a distance vt. अच्छा, इतने टाइम में यानी एक टाइम पीरियड में टुवर्ड्स द सोर्स W1 ये वाला कितना डिस्टेंस तय करता है, vt, एंड द सोर्स मूव्स अ डिस्टेंस vs इनटू t. यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में vs और v यानी साउंड और सोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो टाइम पीरियड t में साउंड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है vt, और सोर्स जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है vs इंटू टी. एंड द एंड ऑफ t यानी एक टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद ये वेवफ्रंट W2 एमिट होता है इन द डायरेक्शन in which the source moves. The distance between W1 and W2, which is the wavelength lambda prime, because lambda is the original frequency when the source and the observer are stationary, but in this case the wavelength would seem to be shorter, yani the distance between two wavefronts will become smaller. So the wavelength will be lambda dash, and that will be equal to Vt minus Vs into t. Distance between W1 and W2, which is lambda dash, is Vt minus Vs into t. F. D detects those wave at detects frequency f dash given by, so f dash होगा v over lambda dash, और lambda dash कितना है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो शॉर्टन हुआ है बाय, और उसका यानी वेव इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम t में, यानी एक टाइम पीरियड में, और सोर्स vs इंटू टी डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो वेव्स, दो सक्सेसिव वेव्स एक टाइम पीरियड के बाद एमिट होते हैं, तो उन दोनों की डिस्टेंस का यानी सोर्स और साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डिफरेंस एक वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा. We can write this t as 1 over f. So this is v over f, this is minus vs over f. दोनों में से ये f कॉमन लेके ऊपर ले जाए, so you get v divided by v minus vs. This is the case in which the source is moving towards a stationary observer. Stationary observer जो ऊपर v d था वो 0 है, और यहाँ पे v minus vs यानी negative sign when the source is moving towards the stationary observer. So in this case f dash must be greater than f for non-zero vs. Similarly, if this source is moving away from the stationary detector, then what happens? In this case, the distance between the successive wavefronts will be Vt plus Vs into t, and this distance is equal to 1 wavelength lambda prime. The wavelength has been increased as seen from the reference frame of stationary ear. So again f dash is equal to v over lambda dash, and in this case lambda dash is Vt plus Vs into t. So replace t by 1 over f, and finally you get f is equal to v over v plus Vs. If we combine all these relations, we get the first equation,
that we have discussed. So this was about the Doppler effect. Thank you so much.